Assalamualaikum. Welcome to my channel Biochem Solutions by Fatma. Today our topic of discussion will be the carbohydrates and its subtypes and the role of the carbohydrates in our body. So let's start with the definition of the carbohydrates. They are basically the polyhydroxyaldehydes or ketones and their derivatives or as the substances that yield one of these compounds. सिंपली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहलाते हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट शुगर्स हैं उनके एंड में जो फिक्स आता है दैट इज बेसिकली द ओस. Carbohydrates are the most abundant of all the organic compounds in nature. In plants, energy from the sun is used to convert the carbon dioxide and water into the carbohydrate glucose. प्लांट्स में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है कि हमारे पास सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एनर्जी गेन करके कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर रहे हैं. Many of the glucose molecules are made into long chain polymers of starch and they store the energy. Approximately 65% of the foods in our diet consist of the carbohydrates. हमारी डाइट का जो मेजर proportion है that is basically the carbohydrates. Each day we utilize carbohydrates in foods such as in the form of the bread, pasta, etc. Other carbohydrates called as disaccharides include the sucrose, and sucrose is basically the table sugar, and lactose, that is the milk sugar, and we are utilizing on the daily basis. During the digestion and cellular metabolism, carbohydrates are converted into the glucose, which is oxidized further in our cells to provide our bodies with the energy and to provide the cells with the carbon atoms for building molecules of proteins, lipids and the nucleic acids. हमारी बॉडी में हम जो डाइट लेते हैं वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं they are converting in the simplest form in the form of the glucose, and glucose then provide us energy. In plants, a polymer of the glucose, called as cellulose, builds the basic structural framework, and cellulose has other important uses too, like the wood in our furniture, the pages in our notebooks, and the cotton in our clothing are basically the made up of glucose or cellulose. अगर फंक्शंस की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो सेल्स में कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या रोल प्ले करते हैं. दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल. दे आर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल. अगर हमें इमीडिएट एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो कहाँ से आती है. दैट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द ग्लूकोज. और जो एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म है दैट इज बेसिकली द ग्लाइकोजन. नीचे कुछ हमारे पास शुगर्स जो है उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं. लाइक ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रुक्टोज है. ग्लूकोज इज बेसिकली द aldehyde sugar and galactose is again the aldehyde sugar, and fructose is basically the keto sugar having the keto functional group on carbon 2. What are the classes of the carbohydrates? They are basically the monosaccharides, oligosaccharides, and the polysaccharides. In oligosaccharides, three other types are also like disaccharides, trisaccharides, and the tetrasaccharides. मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं कि जो सिंपली एक या दो शुगर मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करते हैं. ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो दो या तीन या 3 to 10 मोनोसेक्राइड पे कंसिस्ट करते हैं. और पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मैनी इन नंबर. Monosaccharides are simple sugars or the compounds which possess a free aldehyde or keto group and two or more hydroxyl groups. They are the simplest sugars and cannot be hydrolyzed further into smaller units. ये पहले ही सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक शुगर मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करते हैं तो इनको फर्दर हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत नहीं होती है. Monosaccharides contain a single carbon chain and are classified on the basis of number of carbon atoms they possess.
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें शो की हुई हैं। फिर जो ट्रायोज है, दैट इज़ द मोनोसेक्राइड। इसका नेम ट्रायोज क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें बेसिकली जो कार्बन एटम्स हैं, दे आर 3 इन नंबर्स। टेट्रोसिस में हमारे पास 4 कार्बन्स होते हैं, पेंटोसिस में 5 कार्बन और हेक्सोसिस में 6 कार्बन्स होती हैं। और रिलेटिवली इनकी एग्जांपल्स भी शो की हुई हैं कि उसमें एल्डो शुगर कौन सी है और कीटो शुगर जो है वो कौन सी होती हैं। ग्लूकोज बेसिकली द क्या है? द एसेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर ऑल द बॉडी फंक्शंस। एंड इसका अदर नेम क्या है? ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं और ब्लड शुगर भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डाइसेक्राइड। ग्लैक्टोज देन क्या है हमारे पास? सेल्डम अकर्स फ्रीली इन नेचर, बाइंड्स विद द ग्लूकोज टू फॉर्म द शुगर इन मिल्क। हमारे पास मिल्क शुगर जो है इसका बेसिकली क्या नेम है? दैट इज द लैक्टोज। ये किससे मिलकर बनी होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। Once absorbed by the body, galactose is converted into the glucose to provide the energy. Fructose. Fructose, the sweetest of all the sugars and occurs naturally in fruits and honey. इसको हम basically क्या कहते हैं? That is the fruit sugar. Now what is the stereochemistry? Stereochemistry is basically the branch of chemistry that deals with the optical isomers. And what are the optical isomers or enantiomers? They are the isomers that differ from each other in the disposition of the various atoms or the groups of atoms in space around the asymmetric carbon atom. asymmetric carbon atom के एट या उसके सराउंडिंग में हमारे पास जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है, वो हमें शो करती है कि दैट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। दीज आर इन फैक्ट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दीज में ऑल्सो बी लिंक टू द लेफ्ट एंड राइट हैंडेड ग्लव्स। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन के सराउंडिंग्स में जो उसके एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन है ये वो इससे मैटर कर रही होती है। One form in which hydrogen atom at carbon-2 is projected to the left side and hydroxyl group to the right side is designated as the D form, and the other form where the hydrogen is projected to the right and hydroxyl is projected to the left is known as the L form. For example, the glyceraldehyde has only one asymmetric carbon atom, that is basically the carbon-2, and it can therefore exist in two isomeric forms, D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde. If we discuss about the properties of the monosaccharides, then there are basically the different properties. Like number one is the mutarotation. What is mutarotation? Mutarotation is basically when a monosaccharide is dissolved in water, the optical rotatory power of the solution gradually changes until it reaches a constant value. कि हमारे पास जो मीटा रोटेशन है वो बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी मोनोसेक्राइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो अपनी जो पोजीशन है या ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल चेंज कर लेता है अनटिल अनलेस वो एक इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन कर लेता। लाइक यहाँ पे एग्जांपल कोट की हुई है कि व्हेन डी ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द given value is obtained, but this slowly changes so that within a 24 the value has become the 52.7. This gradual change in specific rotation is known as the meta-rotation. This phenomenon is shown by the number of pentoses, hexoses, and reducing disaccharides. The second property of the monosaccharide is the glucoside formation. What are the glucosides? When D-glucose solution is treated with the methanol and hydrochloric acid, two compounds are formed. These are alpha and beta D-glucosides. Thus formed glucosides are not reducing sugars and also doesn't show the phenomenon of meta-rotation. रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं कि जिसमें हमारे पास फ्री एल्डिहाइड कीटो ग्रुप मौजूद होता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स लाइक सुक्रोज हमारे पास इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप मौजूद नहीं होता है। इसी तरह मोनोसेक्राइड जो है वो रिड्यूसिंग पावर भी रखती हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को भी कैरी करती हैं। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे पास हम उसको बेसिकली एक ओवरऑल नाम देते हैं कि दैट आर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस।
रिडक्शन में अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन जो प्रेजेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव अल्कोहल विद द सोडियम अमाल्गम के स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है वो उस गिवन कंपाउंड की रिडक्शन कॉज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज गिव द हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। क्या नाम है उस हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का? सोर्बिटोल एंड मैनिटोल। इसी तरह डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी मोनोसेक्राइड्स कैरी कर सकते हैं। The monosaccharides when treated with the concentrated H2SO4 it get dehydrated to form the 5-hydroxymethyl furfuryl derivative. मिथाइलेशन और एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस भी मोनोसेक्राइड्स कैरी कर सकते हैं लाइक ग्लूकोसाइडिक एंड अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड्स and reducing disaccharides react with the acetylating agent ये कोई भी हो सकता है like acetic anhydride pyridine में to form acetate derivatives जिसको हम क्या कहते हैं एस्टर्स कहते हैं। अगर हम डिफरेंस देखते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स वो हैं दे दैट आर कंटेन द फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटो ग्रुप। क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप मौजूद नहीं होता है। रिड्यूसिंग शुगर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कंसिस्ट करती हैं लाइक हेमी एसिटल और हेमी कीटल। इसी तरह नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो एसिटल और कीटल फॉर्म पर कंसिस्ट करती हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि जस्ट रिड्यूसिंग शुगर जो है वो न्यूट्रल रोटेशन शो करती हैं जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स न्यूट्रल रोटेशन शो नहीं करती क्योंकि उनकी जो कार्बन 1 है या एनोमेरिक कार्बन होती है उनके पास जो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप मौजूद नहीं होता है तो वो आपस में कोलैबोरेट कर सकें और लिंक जनरेट कर सकें। इसी तरह रिड्यूसिंग शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स बनाती हैं जिसको हम ओसोजोन्स कहते हैं जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ये डेरिवेटिव्स नहीं बनाती और इसके अलावा ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी बना सकती हैं जिसको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। Then there are given the examples of reducing and non-reducing sugars like glucose, fructose and lactose। जबकि non-reducing sugars में हमारे पास सुक्रोज है, ग्लाइकोजन है और इनोलिन है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल एड्रेस दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट further types of the carbohydrates like oligosaccharides and the polysaccharides. Until unless, Allah Hafiz.